Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 3, that is flowers and seeds, and today I will deliver its second lecture. So my dear students, let's start the lecture with an activity. For this activity, you need the flower again, ताकि आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें. तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट पोलन ग्रेन्स इन एंथर. ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एंथर और फिलामेंट आर collectively called the male part and they are called stamen. So the top part, the sac-like part on the filament is called the anther. So आपने इनको observe करना है. Inside it they feel very powdery. मैंने इनको check किया था. And what next you need to do is इसके बाद आपको feel the texture of the anther. आपको इनके texture को feel करना है. They feel powdery. Then transfer the pollen grains from one flower to another with the help of cotton bud. अब आपको cotton bud से या I am using my fingers आपको इसको stigma के ऊपर place करना है. ठीक है, so here is the stigma, the sticky part of the flower. I will place it on the top of the flower. ठीक है, so इधर से ही जो है वो pollen tube generate होती है and it goes down towards the ovary and the sperm cells are transferred from the top to the bottom through that tube. So इस तरीके से आपको जो है वो पार्ट्स को अलग करके और फिर आप खुद से उनको ऑब्जर्व करें और उसको जो है वो ट्रांसफर करें, क्योंकि आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि हाउ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर्ड ऑन द स्टिकी स्टिग्मा, द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. So my dear students, pause the video and complete this task. I hope everybody has performed it. I hope you have also enjoyed it. So my dear students, let's move forward. So in today's lecture, the students will be able to define pollination and describe its types with examples. So आज आप pollination के बारे में पढ़ेंगे, इसको define करना सीखेंगे और इसकी different जो types हैं हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. So my dear students, Allah says in Quran, and grain having husks and scented plants. So Allah ताला ने कहा है कि कोशे हैं जो कि जिनमें भूसा भी होता है और plants भी अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं जो खुशबूदार होता है जैसे कि फूल हैं. So my dear students, some pre-reading questions. Have you ever observed pollen grains? I have just observed them. बहुत फाइन होते हैं पार्टिकल्स इनके. They are inside the anther और आपको इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा. So my dear students, now we will discuss about pollination. कि जो insects हैं ये flowers से उनका nectar पीने आते हैं for their food, and when they sit on the flowers, so the pollen grains are attached to the legs of the flower, and when they sit on the next flower, so this is how pollination occurs. So my dear students, now I request you all to please open page number 38 in your Science 5 books. Very good. I hope everybody has opened the page. Let's start the reading and discuss about pollination. Pollination and its types. Stamen and carpel play their role in seed production. Pollination is first stage in seed production. In this process, pollen grains are transferred from anther, that is male part of the flower, to stigma, female part of the flower. Pollination takes place within the flower of the same species. For example, pollen from tulip plant can only pollinate with another tulip plant. So my dear students, pollination जो है वो तब होती है जब insects जो हैं they sit from plant to plant, और इस तरीके से भी होती है और दो तरीके हैं pollination के, उनकी types हम बाद में पढ़ते हैं. लेकिन basically pollination क्या होती है कि जब anther से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिकी स्टिग्मा जो है उसके ऊपर जो है वो फॉल करते हैं. तो पोलिनेशन का फर्स्ट प्रोसेस है ये प्लांट रिप्रोडक्शन का, कि जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिकी स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन. अभी सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, इसके बाद जो है वो पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है वो पूरी रिप्रोडक्शन अकर होती है और सीड्स और फ्रूट्स जो हैं वो बनते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन क्या हैं? There are two types of pollination, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination. Self-pollination occurs when pollen grains from the anther fall directly to the stigma of the same flower or stigma of another flower of the same plant. It is the basic type of pollination as it involves only one plant. It is a simple and quick mode of pollination that does not need an external source to transfer pollen grains. So my dear students, self pollination क्या होती है कि जो सेम फ्लावर है
उसके जो पोलन्स हैं वो दे फॉल ऑन द stigma of the same flower or the stigma of the other plant of this other flower of the same plant. यानी कि एक पौधा है और उसके ऊपर जो है वो ये देखें कि यहाँ जो है ये एक फूल है एक पौधे पे और इसके जो एंथर्स हैं इसके अंदर से पोलन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाए स्टिग्मा के ऊपर और दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन. सो ये एक ही फ्लावर के अंदर या एक ही प्लांट में अगर यानी कि अगर इस फूल से इसी प्लांट के दूसरे फूल के ऊपर जो है वो एंथर्स जो है वो फॉल करेंगे या सॉरी पोलन्स अगर फॉल करेंगे तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन. इसके अंदर कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए था जिसने जो है वो पोलन्स को स्टिग्मा के ऊपर या फीमेल पार्ट के ऊपर ट्रांसफर किया. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पोलिनेशन एंड दिस इज द क्विकेस्ट मोड ऑफ pollination and this is called self pollination क्योंकि ये within the plant हो गई. So my dear students, here you can see now we will discuss about cross pollination. जब insects जो है वो नेक्टार पीने आते हैं प्लांट का तो उनके फीट के साथ पोलन्स अटैच हो जाते हैं जो कि एंथर के अंदर हैं and then they will move to another flower. ठीक है, सेम स्पीशी के दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे तो जो इनके पैरों पे पोलन्स लगे हुए हैं वो स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाएंगे दूसरे फ्लावर के और फिर दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन क्योंकि इसके अंदर एक एक्सटर्नल जो है वो इंसेक्ट इन्वॉल्व था. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉस पोलिनेशन ऑन पेज नंबर 39. क्रॉस पोलिनेशन. Cross pollination occurs when pollen grains from the anther of one flower fall onto the stigma of a flower of an other plant. यानी कि दूसरे प्लांट के फ्लावर पे गिरेंगे ऑफ द सेम स्पीशी, लेकिन स्पीशी सेम होनी चाहिए. यानी कि रोज के साथ ही जो है वो पोलिनेट हो सकता है, किसी और के साथ नहीं हो सकता. इट इज अ कम्प्लेक्स टाइप ऑफ पोलिनेशन एंड इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्लांट्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर डिफरेंट प्लांट सेम स्पीशी के हो सकते हैं और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पोलिनेशन है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन क्योंकि इसके अंदर एक एक्सटर्नल सोर्स जो था इंसेक्ट्स के तौर पे जो है वो इन्वॉल्व था. सो है यू कैन सी कि ये दो डिफरेंट प्लांट्स हैं लेकिन सेम स्पीशी के हैं, दोनों ही हिबिस्कस प्लांट्स हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग पौधों पे लगे हुए हैं. तो ये जो पोलिनेटर है या इंसेक्ट है ये यहाँ नेक्टार लेने आया था, इसके पैरों पे ये पोलन्स जो हैं ये अटैच हो गए. नाउ इट विल सिट ऑन द दिस फ्लावर एंड द पोलन्स विल फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. इसके यानी कि इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन. ठीक है. सो व्हाट बेसिकली पोलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, स्टिकी स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन. ठीक है. एंथर्स का पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने को हम पोलिनेशन कहते हैं. So my dear students, this is pollination from one flower to another flower. This is called cross pollination, okay, because there is an external source involved in it. So transfer of pollen grains given on page number 39. Transfer of pollen grains from one flower to another is in cross pollination becomes possible due to different pollinating agents also known as pollinators such as birds, bees, bats, butterflies, moths, beetles or other animals. Wind and water also derive the pollination process. The plant uses its colorful flowers to attract pollinators. So my dear students, क्रॉस पोलिनेशन के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, मुख्तलिफ एक्सटर्नल सोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं. इट कुड बी अ बर्ड, इट कुड बी एन एनिमल, इट कुड बी अ बीटल और एन इंसेक्ट और विंड और वाटर. ठीक है. इस तरीके से क्रॉस पोलिनेशन होती है और जो कलरफुल पेटल्स हैं ये पोलिनेटर्स को या डिफरेंट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं ताकि पोलिनेशन अकर हो. So did you know, given on page number 39, you need to know that when an insect pollinator visits the flower to collect the nectar, it accidentally picks up the pollen of its body, on its body. As it goes on to another flower, it will deliver some of that pollen to the female part of the flower of the same plant species. Sometimes the pollen grains are transferred by wind. The world's most important crop plant, wheat, rice, corn, rye, barley and oats are pollinated by wind. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पोलिनेशन जो है वो ये इंसेक्ट्स के थ्रू भी होती है, एनिमल्स के थ्रू भी होती है और ये हवा के ज़रिए भी होती है.
wheat, rice, corn, ray और barley में या oats में pollination wind के through होती है. Pollen grains are also can also float on water, some on water surface until they contact the flower of the same species. Cross-pollinated flowers include grass, alfalfa, banana, maize, pumpkin, cucumber, melon, broccoli, summer radish, tomato, bean, beetroot, carrots, cabbage, cauliflower, onion, pepper, pea, etc. So my dear students, जो क्रॉस पोलिनेशन जिन प्लांट्स के अंदर होती है उन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस पोलिनेशन पानी के जरिए भी होती है, हवा के जरिए भी होती है, एनिमल्स के जरिए भी होती है. क्योंकि इसके लिए एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, इसलिए इसको क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है. So my dear students, now is the time for practice. For practice, what you will do is you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, define the following: self-pollination and cross-pollination. Very nice. You can do this very easily. You can also take help from the book. Now fill in the blanks. Pollen grain is pollen grain is dash stage in seed production. Two modes of pollination are dash and dash. Wind and water derives the dash process. Pollen grains are transferred from dash to dash. Plants uses its colorful flowers to attract dash. So complete this worksheet. Now is the time for evaluation. How transfer of pollen grain is possible? It can be by self भी हो सकता है, ये self pollination के through और cross pollination के through भी. What are the types of pollination? Cross pollination and self pollination. So my dear students, quickly note down your homework. Home activity: enlist 5 self pollinating and 5 cross pollinating flowers. Collect, paste and label the flowers of your enlisted plants. So my dear students, आपको 5 self pollination और 5 cross pollination के flowers के names लिखने हैं. Self pollinating flowers are arum lilies, tridex, इसके अलावा tomato flowers, pea flowers and okra. They can self pollinate. Then comes cross pollinated flowers: sunflowers, petunia, poppies, snapdragons and violets. They can all cross pollinate. So similarly, you can collect the pictures and you can paste them and write their names. This is also your homework given on page number 40, independent activity. Fill in the spaces to express the types of pollination. आपको इनकी spaces को fill करके बताना है कि इनमें से कौन सी self pollination है और कौन सी cross pollination है. This is self pollination and this is cross pollination. So my dear students, on page number 42, you will also do question exercise number A, MCQ number 3, and from exercise number C, you will do question number 2 in your notebooks. What have we learned today? Today we learned that stamen and carpel play their role in the pollination for the first stage of seed production. 2 types of pollination, we also studied about that: self-pollination and cross-pollination. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. In the next lecture, we will discuss about different types of other things that the flower has, their reproduction processes. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.